Next topic is regular polygon. So regular polygon means what? Sides are equal, interior angles are equal, exterior angles are equal. If you are having three conditions, then the polygon is regular polygon. Now previously we are finding sum of interior angles, okay, and the formula which we have used for that is n minus 2 into 180. Now in this exercise, when you are having a question that find each interior angle, find each interior angle. So now we are talking about each, means every angle we have to count, we have to find. So the same formula you will use, okay. So from there you will get total sum of interior angles, then you will divide that by number of sides. How? Just understand this by an example. For example, if you are having a polygon with 20 sides, how many sides? 20 sides. So first you will find sum of internal angles of that 20 sided polygon. So n minus 2 into 180, value of n 20 minus 2 into 180, okay. So from there we are getting 20 minus 2 18, 18 into 180, okay. So 3240, 3240 is required sum of इंटीरियर एंगल्स. अब ये जो है ये पूरे पॉलीगॉन का है ना, पूरे पॉलीगॉन का ये सम है एंगल्स का. बट व्हेन वी वांट टू नो अबाउट ईच एंगल, ये तो पूरे, जैसे एक आपके पास पेंटागॉन है. अब इस पेंटागॉन का सम आपको पता है कि 540 है, बट हर एक एंगल कितना आया अगर ये निकालना है तो उसके लिए क्या करना है? फॉर दैट सिंपली यू हैव टू डिवाइड सम ऑफ इंटीरियर angles upon n. So sum of interior angles calculated 3240 divided by n, value of n 20, 0 0, 2 1 ja 2 1 ja 2 6 ja 2. So 162 degree is the required each angle, okay. So this is about interior. When you are having about exterior, that is very easy. For exterior angle simply 360 divided by n. If you are having a polygon with 18 sides and you want to know each exterior angle, so you will use this formula. Exterior angle equals to 360 upon 18. So 18 1 ja 18, 18 2 ja 18 0. So 20 degree is the required answer, okay. So again I am explaining you, remember, for each इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल के लिए पहले आप क्या करोगे, n माइनस 2 इंटू 180 से टोटल सम कैलकुलेट करोगे, फिर जो सम आएगा एंगल्स का उसको फिर से n से डिवाइड करोगे तो आपका ईच इंटीरियर एंगल निकलेगा. और एक्सटीरियर एंगल के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 360 बाई n. सो वेरी इजी, ओके. सो नाउ स्टार्टिंग एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 28B. So 28B, the first question is given to you, fill in the blanks in case of regular polygon. So number of sides, in first case it is given 6, then each exterior angle we have to find, that is fill up, then each interior angle we have to find, again a fill up. So the first thing is what, for exterior angle you know formula, exterior angle equals to what, 360 upon n. So 360 upon n, n means number of sides. कितना given है? 6 given है. So 360 divided by 6, 6 1 ja 6 6 ja 6 0 ja. So our exterior angle is 60 degree, okay. Any doubt? If you are having, you can message. Then next is about interior angle. Each interior angle we have to find. So before that we should know sum of interior angles. So the formula is n minus 2 into 180. So n is 6, 6 minus 2 into 180. So 4 into 180. From there we are getting 720 degree.
Okay, so 720 degree we got here. Now each interior angle we have to find. So as I told you that sum of interior angles, and we will divide that sum by n. So sum कितना आया 720. n क्या है, नंबर ऑफ साइड 6. 6 1 जा 6 1 जा 6 2 जा 6 0 जा. So 120 degree is the value of each angle in that polygon who is having sides 6. Okay. Then question number 2 is same. Then question number 3rd, first is fill up, means number of sides we have to find. Second is given exterior angle. Exterior angle is given how much, 36 degree. Then interior angle we have to find. So use formula for exterior angle. So exterior angle equals to what, 360 upon n. Now exterior angle is given to us, कितना given है 36, तो equals to 360 upon n. n को इधर भेज दो तो 36 into n equals to 360. Now 36 we have to transpose on right hand side. So n equals to what, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 36, तो वहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो 360 डिवाइड बाई 36. सो n इक्वल्स टू 36 1 जा फॉलोड बाय 0. कितनी साइड्स आ गई, 10 साइड्स. तो जैसे ही साइड्स आ गई इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हो. इंटीरियर एंगल के लिए फार्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल के लिए फार्मूला होता है n - 2 × 180. सो 10 - 2 साइड्स कितनी, 10 10 - 2, सो 10 - 2 8 8 × 180, सो 1440. ओके, 1440. दिस इज़ द टोटल सम. ये पूरे इंटीरियर एंगल का सम है. अब हर एक एंगल निकालना है ना इंटीरियर, तो डिवाइड बाय n. सो 1440, n की वैल्यू 10, 0 0 कैंसिल, सो 1 एंगल इज 155. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए पूरे इंटीरियर एंगल्स का सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स. ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स. सो नेक्स्ट यू कैन सॉल्व. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2. सेम. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आई एम सॉल्विंग हियर. क्वेश्चन नंबर 2, find the number of sides in a regular polygon if each interior angle is given. Each interior angle is given how much, 150 degree. As you know about formula, each interior angle equals to sum of interior angles divided by number of sides. Now each interior angle is given to you how much, 150, equals to sum of interior angles that we have to find. Okay, and number of sides exactly we have to find. Okay, so you know formula of sum of interior angles. Formula is n - 2 इंटू 180 अपॉन n. ये n जो है ट्रांसपोज होगा इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 150 इंटू n कितना हो जाएगा, 150n इक्वल्स टू दिस वैल्यू वी आर हैविंग इन ब्रैकेट एंड 180 इज मल्टीप्लाइड. तो ये जो 180 मल्टीप्लाई हो रहा है ये ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. सो 180 इंटू n, 180n माइनस 180 इंटू 2. ओके, so 150n equals to 180n minus 180 into 2 360. 360 को ट्रांसपोज करना है. so 150n माइनस है 360, so on left side plus 360 equals to 180n. now transpose this 180n to the right hand side. okay, so 360 equals to 180n. ये यहाँ प्लस है, ऑन दैट साइड माइनस, सो 150n. 180n 150n, 180 n और n सेम है, वी कैन सब्ट्रैक्ट.
180 subtract 150, so we are getting 30 along with n equals to 360. Okay, so now n equals to what? 360 divided by 30, 0 0, 3 1 ja 3 12 ja, so number of sides equals to 12. So in this way you have to solve question number 2. Then question number 3, find the number of sides in a regular polygon if each exterior angle is given. So each exterior angle is given how much? 36 degree. So you know formula about exterior angle. Each exterior angle equals to 360 upon n. Each exterior angle is given to you how much? 36, so equals to 360 upon n. Transpose it, 36 into n equals to 360. Now transpose this 36 to the right hand side, so n equals to what? 360, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, in that side division, 36 1 जा 36 10 जा, so n equals to 10 sides. That is very easy, you can solve. Then question number 4, 5, these are same, and already I explained you that if number of sides, that means value of n, you are getting a whole number, means 3 या 3 से ज़्यादा, मोर देन, बट डेसिमल नहीं होना चाहिए. अगर डेसिमल नहीं होता है, 3 से ज़्यादा होता है, तो पॉसिबल है पॉलीगॉन. अगर डेसिमल आता है तो पॉसिबल नहीं है. अगर 3 से कम आता है तो तब भी पॉसिबल नहीं है. ओके, सो 4 5 यू कैन सॉल्व, एग्जाम्पल्स आर गिवन. देन क्वेश्चन नंबर 6, the ratio between interior angle and exterior angle of regular polygon is 2:1. So interior angle equals to 2/1. Now we have to find each exterior angle of this polygon, the number of sides in this polygon. Okay, so for this question we have to find each exterior angle and number of sides in the polygon. Okay, so this is your line A, B, then let this one is a angle. Okay, another arm C. So now it is given interior angle and exterior angle. So let this is your interior angle 2x and this one is exterior x. As you can see, they are forming a linear pair. So angle, let this is O. So angle AOC plus COB equals to 180. AOC 2x, COB x, 180. 3x equals to 180. Now 3x can be written as 3 into x equals to 180. So x equals to what? 180 divided by 3. So x equals to 3 1 ja 3 6 ja 18, 0 ja 0, 60 degree we are getting. So the answer for each exterior angle is 60 degree. Now we have to find number of sides. So as you know, each exterior angle equals to 360 upon n. So exterior angle is 60 degree and 360 upon n. So transpose this. So n equals to what? 360, ये n इधर जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, upon 60, 0 0, 6 1 जा 6 6 जा. So n equals to 6 sides. Okay, so chapter number 28 is over. If you are having any doubt, do message. Thank you.